Assalamu alaikum, my beloved students. I hope कि आप ठीक होंगे. Today, my topic about this reproductive biology is associated with the concept of the pollen grain, that is concept of germ aperture here. If you remember, we discussed the structure of this pollen grain while we try to understand that a pollen grain, which is usually two-celled before pollination, composed of a generative cell which is mother of the male gametes and another big cell called as vegetative cell. You also know that a pollen grain is bound by inner smooth layer composed of pectin and cellulose, responsible for pollen tube formation called as intine. It is simultaneously covered by hard, complex and sculptured layer, which is a resistant layer, composed of this sporopollen in here, and this is called as exine. You also know that exine plus intine is collectively the pollen wall, which is as per the language of this paleontology called as sporoderm. बेटा आज आपने याद रखना है कि germ aperture हम किसे कहते हैं. For that, first of all, before definition, you observe this diagram. If you observe, this dotted layer is actually exine. This inner layer is intine. If you can observe, at certain regions, these dots are absent. Like this, like there, like here, dots are absent. If dots are absent, you will say, sir, exine is absent there. So you have to say that region where this exine is either weak, it is not fully developed, it is not fully deposited, or you can say sporopollen is not deposited, or it is totally absent. Please remember, this part of this pollen wall is called as germ aperture. If you observe this pollen grain under microscope, at certain regions, you will observe that there is a pore, there is an aperture within this pollen wall. वहां पे exine या absent होता है बेटा या weak होता है. मैंने इसके लिए germ aperture की term दी है. Now we'll say, what is this germ aperture and what's the role played by this? I will say, it can be defined as an area on this pollen wall. You know, it's pollen wall, outer exine plus intine, or which is called as sporoderm. It is an area on this pollen wall, on this sporoderm, where exine or its composition is sporopollen, where exine or sporopollen is either weak or it is absent. So, वो area where exine is absent, where exine is weak on this pollen wall, botanically speaking, rather paleontologically, we have to propose a term. This is called as germ aperture. Sir, what is the role being played by this germ aperture? It is directly linked to the germination of the pollen grain. Sir, what does that mean? मैं आपको बताऊंगा. Later on, will explain this. The pollen tube emerges, बाहर निकलता है. It emerges out of pollen grain. जब भी ये pollen grain से pollen tube बाहर निकलता है, कहां से निकलता है? Via germ aperture. So germ aperture का काम होता है pollen grain का जो pollen tube होता है वो इसी germ aperture से बाहर निकलता है. मैं आपको समझाऊंगा. I'll give example. Suppose a pollination has taken place. A botanical marriage has taken place, which means the transfer of the pollen grains from anther to the stigma. लेकिन जब एक पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे बेटा डिपॉजिट होता है, इस पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट्स होते हैं. सबसे पहले जहां ये डिपॉजिट होता है, इस वाले पार्ट ऑफ गाइनोशियम को हम स्टिग्मा कहते हैं. लेकिन इस पोलन ग्रेन के जो दो मेल गैमीट्स है,
वो इस एम्ब्रियो सैक के एग के अंदर आनी चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। इट इज पॉसिबल, ये तब पॉसिबल है जब इस पोलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है, देयर इज ए बिग क्वेश्चन। सर, अर्लियर लेक्चर्स में आपने बताया कि एक्सिन हार्ड होता है, एक्सिन रेजिस्टेंट होता है, एक्सिन हार्ड लेयर होता है, ये पोलन ट्यूब कहां से निकलेगा? डिलिबरेटली pollen greens have evolved a mechanism. एक मैकेनिज्म को इवॉल्व किया कि at certain areas, in a position, in certain areas, the pollen wall is absent, it is weak developed, rather exine is absent. इसलिए जो ये pollen tube निकलता है वो इसी exine से बाहर निकलता है। मैं आपको यहां से भी दिखाऊंगा। अगर ये इंटीन है बेटा तो ये एक्सिन है। अब इस एंटीन से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगा। दो मेल गैमेट्स को यहां निकालने के लिए प्लीज रिमेंबर इनकी एक ही सेफ पैसेज है। ये पोलन ट्यूब इस जर्म एपर्चर से बाहर निकलेगा। इसीलिए मैंने बताया एक पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन तब होती है जब इससे पोलन ट्यूब बाहर निकलता है। एक पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन तब होती है जब इससे पोलन ट्यूब बाहर निकलता है जर्म एपर्चर से। इसलिए आपने याद रखा है वो वाला एरिया ऑन दिस पोलन वॉल जहां एक्सिन या इट्स कंपोजिशन आई मीन स्पोरोपोलिन it is weak or it's absent, it is linked to the germination of the pollen tube because pollen tubes are emerging out of this what is called as germ aperture. Got it? ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। I will say the germ aperture is a common term. This is most important. You have to remember in my lectures because there's some sort of confusion. You can't discriminate. Sometimes you will be asked, what do you mean by germ pore? What do you mean by germ aperture? बेटा याद रखिए, अगर आपके लिए synonymous है तो ये different terms भी है। Germ apertures, it's a big field. Paleontology is a big field. Germ apertures are of different types. They are having different shapes, different characters, different positions. Please remember, germ apertures are usually of two types, जो हम यहां पे बताने जा रहे हैं। Otherwise, it's a big classification. Germ aperture can be called as pore, or it can be called as colpus. Sir, when it will be pore, when it will be colpus? बेटा मैं समझाऊंगा। अगर ये पोलन ग्रेन है, अगर इस पे एक germ aperture which is circular, it seems from this microscope ये circular outline इसकी है। Please remember, germ aperture is called as germ pore. It is called as porate condition. It is pore. लेकिन एक पोलन ग्रेन मेरे पास है। I watched this, I observed this. इसके पास भी germ aperture है, लेकिन ये germ aperture है elongated. If this germ aperture is elongated in position, it is furrow-like. Please remember, ये germinal furrow है. Botanically speaking, in the language of this paleontology, I must say it is colpus at this time. What is this point? So आपने याद रखा है, germ aperture can be pore, it can be colpus. When circular in outline, it is pore. When elongated in outline, it will be called as colpus. So बेटा ये introduction थी. This was about what is called as this germ apertures and the concept of the germ apertures on this what is called as pollen grain. इसके बाद और एक important point है. The number of germ apertures is used in taxonomy for classification. Oh, this is a very important point. For the students of class 11th, for NEET students, they have to remember an important field, that is field which creates order out of disorder, which classifies the organisms based on similarity, dissimilarity and evolutionary relationship. Taxonomy होता है। लेकिन बेटा प्लांट्स की टैक्सोनॉमी में
मुझे पैलियोलॉजी भी चाहिए। सर ये पैलियोलॉजी नंबर ऑफ जर्म पोर्स कैसे हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यूजुअली देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जर्म एपर्चर्स। एक प्लांट के पास एक ही जर्म पोर होगा पोलन ग्रेन पे, वो मोनो एपर्चरेट होगा, बाई एपर्चरेट होगा, दो पोलन जर्म एपर्चर्स होंगे, ट्राई एपर्चरेट, टेट्रा एपर्चरेट कश। सो याद रखना है एक जर्म एपर्चर भी हो सकता है एक पोलन ग्रेन में, किसी प्लांट के किसी पोलन ग्रेन में 2 हो सकते हैं, किसी और स्पीशीज में 3 हो सकते हैं। दैट मीन्स कैन वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। बेटा याद रखना है जनरली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के 2 ग्रुप्स हैं, एक डाइकॉट्स है, दूसरा है मोनोकॉट्स। यूजुअली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि डाइकॉट्स में ट्राई एपर्चरेट कंडीशन होती है, यानी 3 जर्म एपर्चर्स होते हैं। अगर ये पोलन ग्रेन है, विल ऑब्जर्व ट्राई एपर्चरेट कंडीशन विल बी देयर। सो दैट मीन्स यूजुअली देयर इज a rule in case of what is called as the dicots. There are 3 germ apertures per pollen grain. It is tri-aperturate condition. Remember this golden rule. अगर हम monocots को देख लेंगे, monocots में जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक ही जर्म एपर्चर है, देन इट इज मोनो एपर्चरेट कंडीशन। सो जिसने पैलियोलॉजी को पढ़ा है, he understood reproductive biology, he has got the concept of the taxonomy as well. So important field है पैलियोलॉजी. It is very important field to understand. So it is tool of the research here. It is source of information for we people, particularly in the reproductive biology, as well as what is called as this taxonomy, because there is a rule for the classification is generally. It is a rule which is followed by dicots that they have 3 germ apertures per pollen grain, and in monocots there is 1 germ aperture per pollen grain. बेटा आज आपने याद रखा है जो पैलियोलॉजी, जो कंसेप्ट ऑफ जर्म पोरस है, जो अभी तक आज आपने पढ़ा है, वो टैक्सोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। So this was what is called as the concept of the germ apertures here, and it is different versions here. I hope कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। इसके बाद बेटा हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो कंप्लीट किया है, एक्सीन पढ़ा है, एक्सीन के टाइप्स, एक्सीन की स्कल्पचरिंग, कंपोजिशन, इंटीन पढ़ा है, इंटीन की कंपोजिशन, इसी स्कल्पचरिंग और जर्म एपर्चर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था और हमने बेटा इसको भी कंप्लीट किया। इसके बाद we'll try to have certain terms which are particularly associated with this paleontology. Let's explain them one by one. First term, right here topic, some important terms. Some important terms. Term number first, pollinosis. This is pollen allergy. You call this as pollen allergy. There is synonymous word. It is hay fever. Hay means grass. Symptom is fever. It is usually caused by the grasses which show anemophily, wind pollination. In the language of the medical world, it involves the respiratory system. It is bronchial allergy. मैं आपको बताऊंगा. Usually in the spring season, maximum people claim that they suffer from the allergies. They have running nose. They have what is called as other such symptoms here. When they go to the doctor, they are given the anti-allergic drugs. Please remember, they had inhaled the pollen grains floating within this air. पोलन ग्रेन जब अंदर जाएंगे, एलर्जेंस इनके अंदर है, वो एलर्जेंस हम में, एंटीजन जो है हम में एलर्जी कॉज करते हैं। इसीलिए जो एलर्जी कॉज होती है पोलन ग्रेन की इनहेलेशन से, रिमेंबर इट इज पोलिनोसिस। विल से इट इज द एलर्जी caused by inhalation of airborne pollen.
जो pollen grains within the air होते हैं, if we try to get them, definitely will suffer from the allergies. That allergy is called as pollinosis. It is pollen allergy. Please remember, the symptom is usually fever. He means grass. It is usually caused by the grasses. For example, in the NEET exams, you can be asked this type of question. For example, amaranthus. Iske pollen grains. Oh, they are lethal to cause the pollen allergy. Yes. Chenopodium. This is another. Carrot grass. Then castor. इससे बीन्स निकलते हैं, इससे ऑयल भी निकलता है बेटा. Cyanodon could be. These are some of the plants which are usually releasing their pollen grains within the air, and these are actual main culprits behind this pollen allergy, and यही responsible है pollinosis के लिए. Got it? ये पहली टर्म है pollen allergy, जिसे आपने बेटा pollinosis कहा है. इसके बाद दूसरी टर्म भी आएगी, सेकंड टर्म मेलिसोपैलियोनोलॉजी. Melisopaleonology, I will say. Honey production is one of the big businesses today. It is regarded as some sort of superfood which is nutritious. लेकिन इस honey के अंदर pollen grains भी होते हैं. अगर honey बना है एक फ्लावर से, एक ही टाइप, it is unifloral. अगर हनी बना है, पोलन ग्रेन्स आए हैं बहुत सारे फ्लावर से, मल्टीफ्लोरल होता है. ओके, एक बात. दूसरी बात है, समटाइम्स a pollen grain can be lethal. I said once upon a time in the earlier lectures, Sergenia lethalis, वो एक प्लांट है जिसके पोलन ग्रेन्स अगर इंजेस्ट हो, that could lead to the death of that very person. इसलिए जो हनी बनाते हैं ना बेटा, उनको ये देखना है कि हनी के अंदर जो पोलन ग्रेन्स जाते हैं, जो खाने वाला होगा, इनके लिए तो ये नॉर्मल है या इनके लिए कल जाके पॉइजनस बन सकते हैं. इसीलिए वी हैव टू स्टडी पोलन ग्रेन्स विद इन दिस हनी. देयर इज अ सेपरेट फील्ड which involves study of pollen grains within this honey. That's called as melisopaleonology. So it is study of pollen grains in honey. Please remember, it's study of pollen grains within the honey, because sometimes this pollen grain can be lethal. अगर आपको याद होगा, there was once upon a time an example. This was Sergenia lethalis. याद रखना है, its pollen grains are really lethal. They're dangerous. Hence, this is second. That is, whenever we study the pollen grains within this within this honey, we say it is called as melisopaleonology. तीसरी बात, geopaleonology. Third term, you have to remember geopaleonology. Geo means earth. It is study of fossil pollen grains. Pollen grains can exist in the form of fossils. Yes, they are hard to decompose क्योंकि इनके पास एक्जीन है, हार्ड. ये पोलन ग्रेन्स जमीन में गिर सकते हैं. We have extracted the pollen grains which are millions of years back. We can study them. ये किस प्लांट से आए, किस अर्थ से आए. So that means we can study a separate branch, geopaleonology, which is study of fossil pollen grains. Please remember, fossil pollen grains are called as palinofossils. If you will be sometimes asked कि palinofossils कैसे बने हैं, आप याद रखिए, pollen grains का जो एक्जीन है ना बेटा, that is very much resistant here. इसमें कभी भी ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट नहीं आता है. इसमें रेजिस्टेंस आती है, हार्ड स्ट्रक्चर इसी एक्जीन की वजह से आता है. इसलिए पोलन ग्रेन जमीन पे गिर के विदाउट डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, लीचिंग, ये कल जाके फॉसिल्स बन सकते हैं. फॉसिल पोलन ग्रेन की स्टडी को हम कहते हैं जियोपैलियोनोलॉजी, एंड फॉसिल पोलन ग्रेन्स आर पैलिनोफॉसिल्स. ये तीसरी टर्म थी. इसके बाद फोर्थ टर्म, it was asked in the this question was asked in the NEET exams as well few years back.
मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट व्हाट वाज आस्क्ड मैं वो भी आपको बताऊंगा. दिस इज पोलन वेरिएबिलिटी. सर व्हाट इज पोलन वेरिएबिलिटी? एक पोलन ग्रेन का जो टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में ये फंक्शनल होता है, इसे हम कहते हैं पोलन वायबिलिटी. If a pollen grain can remain viable for 30 minutes, we say its viability is only half an hour. If it can remain for 1 day, we'll say its, for example, viability is 24 hours. So we'll say pollen viability means the time period for which a pollen grain will remain active. It will remain functional here. It will be able to do its work here. We'll say इसे हम कहते हैं pollen viability. लेकिन इसके साथ जो क्वेश्चन आया था हमें, क्या अगर हमें एक pollen grain if it can survive naturally for 30 minutes, लेकिन मुझे ये pollen grain चाहिए, it should survive for more than 10 years, more than 100 years. So what is the plan? What is the technology? Yes, we can sometimes use these pollen grains for different breeding programs here. लेकिन एक पोलन ग्रेन को सबसे पहले जिसकी लाइफ स्पैन थी खाली 30 मिनट्स, हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट वी कैन सर्वाइव इट फॉर 30 इयर्स? बेटा याद रखना है, एक पोलन ग्रेन को हम पोलन बैंक्स में स्टोर कर सकते हैं. एक्सीटोस कंजर्वेशन कंसेप्ट है. लेकिन जिस पोलन बैंक में इसको हम स्टोर कर सकते हैं, इस पोलन ग्रेन के अंदर, इस पोलन बैंक के अंदर वो कौन सा कंसेप्ट है दैट इट कैन रिमेन सर्वाइवल फॉर द मोर देन 30 इयर्स? प्लीज रिमेंबर, जिस साइट पे इनको हम सर्वाइव करा सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज पोलन बैंक्स. प्लीज रिमेंबर, इन पोलन बैंक्स के अंदर इनको स्टोर किया जाता है, यहां पे मैं लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में. They are being what is called as preserved there. So, जहां पे प्रिजर्व किए जाते हैं this liquid nitrogen, we will see this preservation is called as cryopreservation. This question was asked in the NEET exam, that whenever something, for example, like pollen grain will be stored at -190 degree centigrade liquid nitrogen here, what is the preservation called as? Remember, this preservation is called as cryopreservation. So बेटा ये 4 टर्म्स है. एक आपने लिखा है पॉलिनोसिस, दूसरा मेलिसोपैलियोनोलॉजी, जियोपैलियोनोलॉजी आपने लिखा है, और पोलन वायबिलिटी का कंसेप्ट भी आपने लिखा है. इसके बाद we'll move ahead. यहां पे आपको मैं एक होमवर्क यहां पे देता हूं. Some sort of small homework I will provide you, and you will watch this and later on you will perform. Sir, what is this homework? Calculate number of microspores, I mean pollen grains, in an anther. एक एंथर के अंदर कितने पोलन ग्रेन्स बने हैं? If each pollen sac contains, if each pollen sac contains 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. सुन लीजिएगा, एक सैक के अंदर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है. आपने बताना है एक सारे एंथर के अंदर, मैं हिंट देता हूं, एक एंथर के अंदर 4 पोलन सैक्स आते हैं. आपने 4 पोलन सैक्स में बताना है टोटल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स. अगर आपकी एक सैक में, पोलन सैक में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है. बेटा दिस वाज what is called as the concept of this germ pore and associated terms. I hope आपने इसको understand किया. In the next lecture we'll observe what we can define. Thank you very much.